the land of lofty heights and steep falls, the land of the wise ones and the wacky ones, the land of knowledge keepers and thrill seekers, the land of stillness, calmness and madness, the land called Uttarakhand. My adventure trail in Uttarakhand starts with the Queen of Hills, Mussoorie. उत्तराखंड की सबसे फेवरेट समर डेस्टिनेशन। ब्रिटिश राज के समय में ये इंग्लिश ऑफिसर्स का सबसे फेवरेट हॉलिडे स्पॉट होता था। Today it's popular with those looking for adventure and its strong winds call out to those with the desire to soar high in the skies. Flying is serious business, okay? And when you're flying 10,000 feet above sea level, it's risky business. और उसके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड जो मेरे पास है नहीं. So I have decided I'm going to go tandem paragliding with an expert so that he does all the technical bits while I just sit back and relax. Giving me wings for the day is Raju Thakur, जिनके पास है 30,000 hours of flying experience और ये 19 years से paragliding कर रहे हैं. So Raj, आप उड़ने से पहले क्या-क्या ध्यान में रखते हो? उड़ने से पहले थोड़ा सा वेदर, विंड फ्लो देखा जाता है और थोड़ा सा अपना डे शेड्यूल का, जैसे क्लाउड कौन से मेंटेन हुए हैं, कैसा रहने वाला है फुल डे और कितना वार्म अप है आपका वैली, उस हिसाब से हम अपना दिन का शेड्यूल बनाते हैं फ्लाइंग का. Is today a good day to fly? Yeah. Paragliding करने से पहले make sure that the equipment and the harnesses work properly. Okay, I'm ready. This is fantastic! The world from a bird's eye view is the best way to see. But you know what? Mussoorie is beautiful. But up from here, it is exquisite! You can go for paragliding in Mussoorie throughout the year except during monsoon. But a hot weather, they say, is more favorable for paragliding. The more the heat is radiated from the ground, the more favorable the winds are, and the higher you float in the cool Mussoorie skies. Whoa, people! Paragliding has many levels, like cross-country flying, thermal flying, soaring, and stunts. Although I would have loved to see Raju perform some stunts mid-air, but sadly, tandem flying में ये possible नहीं है. You know, this was always in my bucket list. And I'm so happy I could fulfill this and tick this off. ज़मीन पर उतरने के बाद my legs are feeling so wobbly I can't begin to tell you. But flying up there amongst the clouds, it was a phenomenal experience. और अगर आपने ये कभी नहीं किया हो, I have to recommend this to you because this is an experience of a lifetime. After a tour of Mussoorie skies, I make my way to the Tehri Lake, जहाँ की Water Kingdom कर रही है मेरा इंतजार. Where the Tehri Lake is today used to be a beautiful town called Tehri. But in 2006, the town had to be shifted to make way for the Tehri Dam. The dam gave rise to the Tehri Lake, and today it hosts a variety of water sports for those who are daring enough. Today I'm at Tehri Lake, which hosts a lot of water sports such as water skiing, wakeboarding, and water scooter rides. They say that water skiing is for the professionals and the amateurs should take it a little easy and go and start with the wakeboarding. मगर मुझ में उतना patience नहीं है, so I'm going straight for the 36 chamber. So finally, I'm here at the water sports jetty and meet my trainer for the day, Mahesh Bhatt. Hello. That's right, his name is Mahesh Bhatt. Hi, Mahesh. So मुझे आज water skiing करना है.
आपको लगता है मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल मैम, आप ट्राई कर सकते हो एक बार, लेकिन जो वाटर स्कीइंग है वो थोड़ा सा कोर्सेज होते हैं, उसके ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप प्रॉपर कर सकते हो। उसका जो बेसिक कोर्स होता है वो 7 डेज का होता है। फर्क क्या है दोनों में, वाटर स्कीइंग और वेक बोर्डिंग में? जो वेक बोर्ड होता है वो एक चौड़ा सा बोर्ड होता है, Okay. ठीक है, उसमें आपका बैलेंस जो है आप इजीली बना सकते हो। लेकिन जो वाटर स्कीइंग होती है वो नैरो पियर में होती है, ओके। तो उनको पहले पानी में पहनना ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आई डोंट नो वेदर आई एम गोना बी एबल टू डू दिस। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स काफी टाइम से हो रहा है। ये नॉर्थ में क्या है कि ये गोवा के बाद यहीं पे इतना जो वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है गोवा के बाद यहीं पे है। महेश भट्ट ने मुझे सिखाया कि वाटर स्कीइंग की ऑप्टिमम पोजीशन होती है चेयर पोजीशन, ऑलमोस्ट लाइक डूइंग स्क्वाट्स। इससे बॉडी का बैलेंस बना रहता है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन इज द एंगल ऑफ द हील्स। इफ आई डोंट नेल दिस पोजीशन, आई एम श्योरली गोइंग टू गो डाउन, डीप डाउन। So I've got the skis on and I've been told by Mahesh to maintain this angle and keep my elbows straight. I know the theory behind it, but I don't know whether my body is going to understand once I'm into the water. So here's wishing me luck, and guys, pray for me. At the speed of 12 knots at 65 RPM, my fears did come true. Attaining that perfect chair position was surely difficult in the first attempt. I tried! But that didn't pull me down. I tried to get up on my feet, but मुझे सही एंगल ही नहीं मिला. I never knew कि अपने पैरों पर खड़ा होना इतना मुश्किल भी हो सकता है. So I tried. It was a disaster. But the main thing is, you need a lot of upper body strength. And clearly, I really need to work out to be able to do this. Water skiing was an epic fail. Let's see how I fare on the wakeboard. So the how to do of wakeboarding goes as such. Step 1. Hug the board tight and venture out into the water clinging onto it. Step 2. जैसे ही the board starts to flow, एक नी पर खड़े हो जाओ. Step 3. Holding the rope of the board, try to get up on your feet and balance. Now this is where the problem is. So this is what happens when you start with the 36th chamber. My skis couldn't cut through the water. My wakeboard got me wobbly. But on the scooter is where the fun is of exploring Uttarakhand in its aquatic realms. This has been a lot of fun, and indeed, I'm not just a biker girl on the land, I'm also a biker girl on the water. It was quite an experience to watch these guys. Now this is how the pros do it. If adventure is what you're looking for, Uttarakhand is the place to come to. यहाँ हर तरह के वाटर स्पोर्ट्स हैं, जिन्हें आप अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से चूज कर सकते हैं. उत्तराखंड is the dream destination for adventure seekers. All that water sports action has really had me going, and I want more. So I'm going to Rishikesh, where the water is ruthless, especially when it falls from a height of 80 feet. Rishikesh is one of the oldest towns in India. Today it's a hub of two kinds of travelers, those praying for their fate and those who challenge their fate. So what was your biggest achievement when you were 20? Mine was being able to cook rice and bhindi all by myself, and till date that is all that I can do. But today with me I have a man who has scaled Mount Everest at the age of 20. And not just that, he also happens to be the youngest guy from Uttarakhand to have done that. Arvind Raturi, a skilled mountaineer who was selected among the top 9 from 30 lakh participants across India for a special expedition to Mount Everest in May 2013. Hello Arvind. Hello ma'am, how are you? It's such an honor to meet you. Thank you so much. Arvind, रैपलिंग एग्जैक्टली होता क्या है? रैपलिंग एक्चुअली मैम एक माउंटेन टर्मिनोलॉजी का वर्ड है, इसे यूरोपियन कंट्री में एप्सलिंग भी बोलते हैं. रैपलिंग एक किसी रॉक फेस से नीचे आने की एक टेक्निक है जिसमें विद सेफ्टी गियर्स यूज होता है, लाइक हार्नेस, रोप, कैराबिनर, सैंडर. 2 रोपों से आप कनेक्ट करते हैं. एक मेन रोप जिसमें आप रैपल डाउन करते हैं और एक बिलेइंग रोप होती है. इनकेस आप फॉल होते हैं
तो ब्लेयर आपको कंट्रोल करता है, आप डायरेक्टली नीचे नहीं आ सकते हैं। और मेरा कितना गिरने का आज मतलब डर है? मैम मैं साथ में तो आपके 0% गिरने के डर। That is reassuring. क्लाइम करके ऊपर जाएंगे। The plan was to get to the top of the waterfall and then rappel down with the force of the water hitting you hard. So we finally reached up here. This is a place where we will make our way down rappelling. And Arvind is going to protect me with all the safety gears. Arvind went first and showed me the how-to of rappelling. और उसे देखने के बाद it became easier for me to follow, I think. The technique is to lean back at 45-degree angle, keeping your feet flat on the rock. Lean backwards from the hip, not the shoulders, so that your center of gravity is in control and slowly release the ropes from your grip. It's all good in theory. But to actually go and do it, I have no clue whether I can. मैं तो हाथ छोड़ दूंगी बस. I should be baking stuff with this, not water rappelling. Make sure कि आपकी knees bend नहीं हो रहे हैं. And wear mitts to save yourself from any rope burns. There was a moment of hesitation just in the beginning. I was like, really? I will have to do this at a 45-degree angle and maintaining that? But once I started, I didn't even realize when I had actually reached halfway through. It was only when I suddenly saw the moss growing on the rocks and I realized I've made good progress. Arvind kept saying, "Ma'am, पानी के अंदर जाओ, पानी के अंदर जाओ." So I kept trying to go back in, but the force of the water was pretty intense. But it was a lot of fun, and like I said, I will do this again. Waterfall rappelling की success के बाद, I managed to tick off yet another adventure spot from my checklist. ऋषिकेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स सीकर्स के लिए ओवरनाइट कैंपिंग का भी ऑप्शन है, जहां गंगा के किनारे कोजी टेंट्स में आप बॉनफायर एंजॉय कर सकते हैं. When I reached Phool Chatti Resort Camp, I met our chef for the night, Arvind Negi. Hello Arvind. Hello. Nice to meet you. अरविंद ने शाम का मेन्यू ऑलरेडी सेट कर रखा था विद सम ऑथेंटिक कुमाऊनी डिशेस एंड टू स्टार्ट विद इट वाज फानू. फानू बेसिकली हमारे यहाँ कुलत की दाल का बनता है. Kulat or gehet is a sort of horse gram that grows in the region of Garhwal. It's high in protein and is even said to cure kidney stones. I'm already loving the smell of it. The state of Uttarakhand originally had two kingdoms, Kumaon and Garhwal. In the past, the neighboring kingdoms were extremely competitive, and their constant one-upmanship with each other continues till date, from language to culture and most importantly, food. गढ़वाली और कुमाऊनी cuisines में क्या difference है? गढ़वाली कुमाऊनी कुजिन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, खाली नाम का डिफरेंस है. आपके सामने अगर गढ़वाली बोल के और कुमाऊनी बोल के ऐसे दो dishes आप differentiate कर पाओगे? No. Okay. So that settles the age-old contest between the two sides of the state of Uttarakhand. फानू का मजा उसके पकौड़ों से आता है. Yeah. शेफ अरविंद ने साइड बाय साइड कुलत की पेस्ट के पकौड़े तल दिए. फानू रेडी है? ओके. It's fabulous. It had a very meaty flavor for a pulses dish. ऊपर से सरसों और मिर्ची का तड़का. Felt like my mother is cooking from Odisha. अब हम बनाने जा रहे हैं एक रोटी. Okay. मकई की रोटी. वैसे तो मकई की रोटी पंजाब की फेवरेट विंटर डिश है, बट सिंस उत्तराखंड में ऑल ईयर राउंड ही सर्दी रहती है, इट्स द परफेक्ट फूड टू गिव द बॉडी सम वार्मथ. एंड व्हेन इन उत्तराखंड, इट्स बेस्ट पेयर्ड विद सम भांग की चटनी. बट वेट, मैं इस टाइप के एडवेंचर के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ. और ये भांग की सीड से मतलब क्या चढ़ेगी नहीं ना? नहीं. द लॉजिक वाज भांग की सीड्स को रोस्ट करने से उनका असर खत्म हो जाता है. टाइम टू ट्राई. लो जी, फिर क्या फायदा. Very tasty. Bhang ki chutney, I'm having it for the first time. It's very nice. Very nice. I have to tell you guys, this has been one of the best meals I have eaten. And I'm going to be sitting with him in a bit. And I'm going to write down all these recipes. So that when I go back to my home, I'm going to try them out. Thank you very much. Okay. Nice to meet you also. अच्छा लगा आपसे मिलके. Arvind was trying to get rid of me. पर उसे क्या पता था अभी तो पूरी शाम बाकी है, जहां गढ़वाली फोक डांसर्स अपने ट्रेडिशनल अटायर में परफॉर्म करने वाले थे.
Along with my dinner, I had some great music, some Garhwali folk music. And these guys are dancing in their traditional attire. And they even dragged me and made me dance. The song was about the legend of two brave Garhwali warriors. मुझे गाना exactly तो समझ नहीं आया, but the music got to me. कुमाऊनी खाना और गढ़वाली नाच गाना. I got the best of both worlds of Uttarakhand in one night. उत्तराखंड जगह है अपने लिमिट्स को पुश करने की. To take up challenges you never ever dreamed you will. And Rishikesh makes you want to take the ultimate leap. Welcome to the bridge, madam. Thank you very much. feeling? Very nervous. Very nervous. Yes. That's part of the game. Okay. Actually, if bungee wouldn't be scary, there would be no point of jumping, yeah? That's the whole point, yes. So it's definitely freaky, of course. Yes. But it's perfectly safe. Okay. Many come to jumping heights at Rishikesh to feel their blood pumping with adrenaline. So this is your main harness. Okay. All the tension of the bungee rope, you'll feel it here. Okay. By jumping from a height of 83 meters, it is amazing to watch people leave their fears behind and take the leap. Oh God. The valley echoed with exhilarated shrieks as they dive down and then get suspended midair. Unfortunately, I can only watch क्योंकि एक बैक इंजरी मुझे बंजी जंपिंग अलाउ नहीं करती. But I wanted to feel the thrill standing at the edge. Oh my God, I can't even think of doing this. And it was something. Oh my God! Oh God, just standing there seeing nothing in front of me, just the ground below. I was told not to look down. But you know, they say you do exactly the thing you've been asked not to do. And that's exactly what I did. I looked down and I was like, do that jump. But not this time. ग्रेविटी को डिफाई करने का मजा तो देख लिया और अब बारी है खुद को रैपिड्स में टेस्ट करने की. I am the double trouble that's going to roller coaster all over this golf course and tee off onto the three blind mice till they return to the sender. Did you get any of that? Well, I'm talking about the famous rapids of Rishikesh, and from the looks of it, they're really rapid. कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा काफी है. रैपिड्स में मेरा सहारा सिर्फ एक राफ्ट होने वाला है. I've heard of whitewater rafting and how treacherous it can be. And I've never ever done it, so I'm really looking forward to it. But in rapids ko dekh, I think to survive, I need to find myself a coach. Hello, Chauhan ji. हेलो मैडम. Sir, why is Rishikesh so perfect for whitewater rafting? एक्चुअल में जो ये गंगा है ये वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए बहुत सेफ है और बहुत एडवेंचरस है क्योंकि हर एक रैपिड के बाद आपको स्टील वाटर मिल जाएगा. सपोज आपकी बोट कहीं पे फ्लिप होती है तो आप आगे जाके स्टील वाटर में आ जाओ. और इसका पूरा डिस्टेंस कितना है? ये 16 किलोमीटर का पैच हम लोग कर रहे हैं. ओके. पूरी से लेके नीम बीच तक. अगर राफ्ट टॉपल होती है तो क्या मैं ध्यान में रखूं तब? आप पे लाइफ जैकेट है, आपको वो डूबने से बचाती रहेगी. और पानी कितना ठंडा है? पानी तो ये तो ग्लेशियर वाटर है. तो मतलब बहुत ठंडा है. ठंडा ठंडा पानी. Okay, so I'm in safe hands. The team has been trained by the very best. And I'm really excited. It's going to be very chilly. I know that, glacier water and all. But you know what? Bring it on. इंडिया में वाइट वाटर राफ्टिंग की टॉप प्लेसेस हैं लद्दाख, ओरछा, कुल्लू एंड कोलाड. बट ऋषिकेश टॉप्स देम ऑल. ये इंडिया में वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए बेस्ट जगह मानी जाती है बिकॉज इट इज फुल ऑफ whirlpools एंड rapids, all ranging from grade 1 to grade 4. हमारे कोच ने हमें वाइट वाटर राफ्टिंग के बेसिक्स बताए. अपने फीट को लॉक्ड रखिए, पैडल को सीधा पकड़िए और 2 मैजिक वर्ड्स दिए, फॉरवर्ड एंड स्टॉप.
And now, with that, it was time to hit the rapids. Okay then. Strong arms! One and a half hours में हमने सारे रैपिड्स क्रॉस कर लिए। पानी बर्फ की तरह ठंडा था और राफ्ट पानी में गोते खाती रही। बट इट वॉज इनसेन। ऋषिकेश में साल के 9 महीने व्हाइट वाटर राफ्टिंग का पागलपन छाया रहता है और करीब 35,000 टूरिस्ट यहाँ आके इसका मजा लेते हैं। I truly feel that whitewater rafting is my calling because I was stable on the raft. And I followed orders as per Hai, our instructor. He shouted saying forward, we were paddling forward. If he said stop, we were good kids out there. Of course, but I have to say that when we were crossing the rapids, there were moments of this river raft completely bouncing on top. And there were moments when my heart was in my mouth, like, oh my God. Now we're going to go up, but the Ganges have been kind. And if thrill seeking is your thing, then coming and facing the rapids in Rishikesh, you have to do at least once in your lifetime. Fall flat on your face at least once in your lifetime, because that's where the real kick is. Where fantasies take flight and fears take a dive. Where the high mountains push limits and winds make you soar. Where nature meets adventure, right here in Uttarakhand.